Compound extends. Beautiful defence. Everything you see in the textbook. And that will conclude the end of the 102nd over of India A's innings. The 12th over of the morning. 463 for 5. Thakur on 9 and I on 203. And of course, Shardul Thakur played that really, really crucial role for India back in 2021 in that series against England. Yeah, going back to what you were saying about, you know, white ball cricket, people giving themselves a little bit of room, people trying to sort of manufacture a shot from a straight ball, trying to engineer themselves a little bit of space. And I think you can do that with the white ball because it doesn't zip around too much. You have a few overs initially, but after that, you're not really having to worry about that nipping past the bat and the outer edge. Yeah, the movement's less prodigious as the red ball. Jack short, and that's been nailed through. Wide mid on, gone to it early, and runs away down to the Colin Cowdrey stand for 4 runs. Well, it's been clear after the 3 shots we've seen from Shardul Thakur that have found the boundary that there's a new message from the balcony there, and India might just be looking to pile as many on the scoreboard now. Yeah, Thakur's here for a good time, not for a long time, I think. That's a good old saying. 467 for 5 now. Thakur, 13 off just 8 balls. Jack in. Thakur, more watchful on that occasion. Yeah, just have to cover the line with his back leg there. Just a bit of movement from Jack. Well, if you're about Canterbury or in Kent and you fancy coming down to watch the cricket today, well, make sure you pop down. It's a beautiful day here in the Garden of England. There's an ice cream man at the ground if that's your fancy. It's on to the legs, and it's going to run away up towards the Nackington Road end. Salmon Akhtar launching the ball into the gloves of James Rue. I'm also salivating over that ice cream then. I feel like Pavlov's dog. And it's in my eye line as well, it's tempting me. It's got a long queue. It's already doing a fair bit of business. Getting on to the legs by Jack. Yeah, there's a pool of water at our feet here in our commentary position. I do apologise, it's just me salivating over the ice cream. On that note, let me just move my chair further away from Dan Whiting. Ready, Jack, 19 years of age. Oh, to be 19, born in 2005. Yeah, born in Barnet, in my neck of the woods. Is that North London? Yeah. Oh, that's delicately played. That's 4 runs. It would have been 4 even if it wasn't for the misfield. There from Josh Hull. Nice. His feet were over the boundary. Yeah, nice little dab there from Shardul Thakur. Just really waits for it, plays it ever so late, right on the head of the ball. And even Josh Hull and his long legs were not able to get round to stop that one. It just flew down, especially down the hill. Yeah, deft and delicate. And debonair. So were you born in Barnet as well? No, I was born in UCH in central London. Yeah, but I lived in Barnet virtually all of my life. Just dropped into the offside. He's got to be quick here. Holden's in pursuit, but they get through for a single. 473 for 5. Karen Nair, a splendid double 100. 203 he's on. Shardul Thakur, he's biffed his way to 18 from 13 balls. Using Dan Whiting and Nicky Chowdhury here from the Spitfire. Ground St Lawrence
at Canterbury. England Lions versus India A. And we've got a declaration, I think. Or is it drinks? No, it's drinks. I was going to say, it was a bit too soon for a declaration. Shardul Thakur just seems like he was enjoying himself out there. He's on 18 from 13 deliveries. But yes, it is time for drinks here this morning in the first session of the day. India A 474 for 5. Shardul Thakur on 18. Naya on 203. He's brought up his 4th double century in first-class cricket, and what a joy it has been to watch. And then, well, since the first ball has been bowled this morning, we have lost 2 wickets. We lost the wicket of Dhruv Jurel, who batted beautifully with Karun Nair yesterday. They put on a walloping partnership, and it was absolutely brilliant to watch, as that partnership was of 213 runs. And the second wicket belonged to Eddie Jack, and that was of Nitish Kumar Reddy, who was caught behind for 7, and that came with 445 on the board. And those were the first 2 wickets of the morning, the only 2 wickets from the Lions this morning. Yeah, Jack's impressed me. Yeah, he's been really impressive, to be honest. And of course, those key partnerships between Sarfaraz Khan and Karun Nair, 181 between them, and then between Dhruv Jurel and Karun Nair as well. So those partnerships, we know how important they are. They've really set India A up in a good, strong position here. And the Blairs just getting themselves refreshed. It is a warm day, and I can tell you one thing. If you're not familiar with the weather in England, because we have not such high levels of pollution, even 25 degrees, which it's forecasted to be today, it can feel quite warm because it really pierces your skin, the sunshine. I've been in India, I was in India in February and in March this year, and it was close to 37, 38 degrees. And it still doesn't feel as bad, I can tell you that. Really? Yeah, it doesn't feel as bad. Yes, it's hot and humid, but the way it pierces your skin here, and you really feel like you're sizzling. It's 25 degrees, and I think that's plenty, I'll be honest. Yeah. In the southeast of England as well, the humidity can get up, can't it? You know, that sort of London heat, where it can often be sort of in the mid-late 20s, but quite cloudy as well, and it's not particularly pleasant heat, actually, it's got to be said. Yeah, not at all. And well, if you're if you're from up north, like you're in Manchester or somewhere like that, like a production crew, I know they were having a chit chat before we got underway today, thinking they might get themselves burned, and I was like, it's not going to be that hot that you'd burn yourself. And then I heard an accent, and I said, wait, hang on, are you from up north? And that probably explains the case. Yeah, they only see the sun about 3 days a year, so... They probably mark it in the calendar as well, right? Oh my goodness, it came out in all its glory today. Tyler from the production team keeps claiming he's from Bristol, but, you know, he's based in Manchester now, so he's no doubt acclimatised to the rain up in the north. You know what, though? I actually think that's true. I think you can acclimatise to the weather, because a few years ago I was out in the UAE, and it was rather warm, and I spent quite a long period out of the country and in places of warmer climates. And ever since I've been back, even if it's 17, 18 degrees, you will find me in a hoodie here, because I'm like, it's a little bit chilly. You get about, don't you? You've been in sort of UAE, India. I'm very jealous of your lifestyle, Nikki. Oh, well, I can't complain. I get to go back to the motherland next week in Mumbai, Yeah. and then I'll head home to Bengal, go to Calcutta. Are you? Yeah, to Calcutta. Okay. The city of joy, that's where I was born. Okay, yeah. Eden Gardens looks a wonderful venue in Kolkata, doesn't it? It looks an amazing venue. I think it's been redeveloped. It's not as big as it used to be back in the sort of 80s when you used to get over 100,000 in there, didn't you? But it's a massive ground, I can tell you that. I've been a few times, and it's one of those grounds when you walk onto the field, right? It's like it just echoes around, and it's massive. You don't really realise how big it is until you're out there on the field. And yeah, I will be there actually at the Eden Gardens. Yeah,
I'd like to go to Chennai as well, although the humidity there Not to deal with that sort of heat. I've heard the temperatures. Naughty, apparently. Dean Jones got himself into trouble. The Australian famous Thai test back in the 80s where he got 210 and ended up on a drip. Yeah, I've heard that you can lose quite a bit of weight if you're batting in Chennai, just because of how hot it is. If you end up batting a full innings, let's say you're out there for 270 balls like Karun Nair has been, you'd be sure to drop half a kilo or a kilo, apparently. That's what I've heard. Great. Where's the flight? Getting summer body ready as the drinks has been taken, and Zaman Akhtar is going to be coming into the attack for the first time this morning from the Nackington Road end. He bowled 16 overs yesterday, 0 for 70, yet to contribute in that wickets column. 3 maidens in that as well. And here he is for the first time this morning on day 2. Nice straight line from him to get going yesterday. Started off with a few stray ones down the leg side. Yeah, he's got a lovely rhythmical approach into the crease. Zaman Akhtar. He's got the one slip in place. We've lost the other. And we'll go through the field as well after this delivery from Akhtar. On this one, steps back a little bit, and Thakur just caught in the crease a bit. I'll go straight to Emilio Gay, who is at a backward point. So field-wise, we have a slip, third, backward point, deep cover, extra cover, mid-off, and over on the leg side, mid-on, deep square leg, and a fine leg where Ajit Singh Dale fields. And the security guards here at the Spitfire ground make their daily laps past us in the commentary tent. And this one is a straight down the leg side. We saw a few of these from Zaman Akhtar yesterday. He just struggles to find that line. We know we've spoken about that slope here, but needs to make sure he gets that line into a playable area for Shardul Thakur. It's a really good take from James Rue there, going down the slope. Ball just goes on and on and on. Well, I told you he enjoys throwing himself around, doesn't he, James Drew? And just did that to stop that one get by. Well, let's get a top edge down towards third, and we'll just be the single again. Very quick hands through the ball there from Shardul Thakur, just trying to ride with it. It's not coming onto the bat at the pace he wants it to. Move on to 19. Now back on strike now, and one thing's for sure, there's plenty of doggies about today as well. That's the lovely thing about Canterbury. It's a throwback to a bygone age, isn't it? People take their dogs to the cricket. Kids go onto the outfield in the break and have a knock-up. Dads v lads. Great to see. Bottom edge is that. Karun Nair just looking to make space into the offside. Yeah, it really gives you a throwback. You know, books back in the day when people used to actually read books made of paper, and they used to paint pictures about England and English gardens, the summer, cricket, picnics, and that entire atmosphere that you'd probably read in an Enid Blyton book. You can really picture it right here in Canterbury today. The famous 5. Oh, and this one stays low on Nair. That stays low. He drops it down. He's a bit too late to him, actually. He doesn't get that by. Yeah, Zaman Akhtar didn't play in the Gloucestershire side. He travelled with the squad to Canterbury when Gloucestershire visited Kent over the Easter weekend. But they've got a rotation policy there with their bowlers, and he was left out of the side that weekend. 104 overs gone in this innings. India A 475 for 5, and we are going to see spin for the very first time this morning as Rehan Ahmed is going to come back into the attack today after bowling 16 overs yesterday, 0 for 95. He did get taken on by Dhruv Jurel and Karun Nair, especially down the ground, and
for Rehan Ahmed. I just felt like he bowled a bit too quickly. I know when he got pumped down the ground, and as a bowler it can be a bit difficult to say, okay, let's just slow it down again, because you need to be able to have that trust. And he just came in and bowled straight into the wicket, really was flying it in. It just became easier for the batters. As that's just pushed into the offside, and a single to tackle. Rehan Ahmed's an interesting one, isn't he? Because he started off as a leg spinner who could bat a little bit, and now he has turned into a top order batter. He bats in the top 3 for Leicester, often opening, and to a degree of success as well, and more of an occasional bowler. So it'll be interesting to see how his career develops, because you know, sometimes you have to be flexible and your career morphs, especially if you're an all-rounder, and often you can go one way or the other. As that's just defended by, now just having a look at the new bowler, bowling from the pavilion end. Ahmed's just got that little stutter, hasn't he, as he approaches the crease, that sort of staccato approach. So that's just pushed off the back foot into the offside for an easy single. 477 for 5. Tacker 120 there. 204. Yeah, he got the reverse sweep out yesterday, Karan Nair, a few times against Rehan Ahmed. That's played with a smidgen of bottom hand through mid-wicket. Rehan Ahmed's brother Farhan, he's in the squad as well, isn't he? Yeah, he is. I saw him yesterday. That's a good bit of footwork as Thakur just rocks onto the back foot. I saw Farhan at Trent Bridge last year in that game that Sai Sudarshan played in, we were talking about earlier. Oh, and that's been smashed down to long on, but it's only going to be one. It's a good old hoik across the line. It's a little bit filthy, as they say, but hey, India A are in pursuit of quick runs. It's going to conclude the end of the over as well. 105 overs in the India A innings, and they are 478 for 5. Yeah, but Farhan Ahmed, I saw last year, he was 16 years old. He bowled something like 58 overs in an innings, and you know, I thought there were laws against, you know, how hard you can work 16-year-olds. It was a real vigil that he just bowled over after, and he only bowled about 3 bad balls in the whole stint. Yeah, I don't think there's going to be many laws when you are a professional cricketer. That's your job. You get paid to play cricket, so do your job. Nice a line here from Akhtar, and Shardul will just drop that into the offside. Just opens the face slightly on contact, allows it just to get through for a 1. 479 for 5 now, India A. And of course, we spoke about Shardul Thakur. He played such a crucial role in the series back in 2021. He hit that 36 ball half century, right? 57 from 36 balls in the first innings of the 4th Test at the Oval. That helped India get out of a massive hole. Full face of the bat, straight out the middle. Beautiful looking defence from Nair. Yes, Aman Akhtar just keeping a lid on things here. Creating, well, often the best way of taking wickets is by creating pressure. That was the Test match that India won as well at the Oval. Up on his toes. All the time in the world. And that was an exciting Test match, I remember. I think I went down to day 2 of the game. And it was back when we had Test matches later in the summer. It was in September. And now the Test match is getting wrapped up by early August now, so we can make way for the 100 tournament in England. And he's nicked that one, and he's going to have to go. That will bring an end
to Karun Nair's fantastic knockout here in Canterbury. 204 for him, his 4th double century. And the England Lions finally get that breakthrough with Zaman Akhtar picking up a wicket. Much overdue for him. He's been toiling at it, relentless with the ball. And finally he gets that breakthrough of Karun Nair, who set up this India A innings absolutely brilliantly. He's really pushing his case here for that opening test match. Just goes through to James Drew. Jags back from Akhtar. And the crowd, well, they are fully appreciative of that knock from him. 204. That brilliant knock comes to an end. Yeah, Zuma deserves that. And just using the slope well. Gets one to jag back in inside edge. And another good catch from James Rue. That's his 3rd. So his 3rd? No, it's his 4th of the innings. So, yeah, well done. But Zaman Akhtar, I think he's bowled well this morning. Bowled within himself and just keeping a lid on things. And we said pressure creates wickets. Absolutely. This brings new batter of Harsh Dubey out into the middle for India A. A left-hander coming in as Karun Nair walks off. Fabulous knock to watch, and yeah, they were just such pretty looking shots from him, you know? Yeah, warm applause from the crowd, and he deserves every ounce of it as well. Big Indian contingent here in the crowd, but also the people of Canterbury as well. They appreciate good cricket down here. Oh, you were lucky I didn't wear my little jersey to sit next to you for today. I was very close to, you know. Tomorrow, Nikki. Akhtar first up to Dubey, finds his line almost immediately, coming around the wicket here to the left-hander. And I think that will be a little bit of a relief point for him as well, because he's really been going relentlessly. Yesterday, towards the back end of the day, did get tonked around the ground. They did try to experiment with Akhtar, brought him on for an over. I think he got hit for 10 off of it. Nicely forward there. And that will conclude the over from Zaman Akhtar. He gets the breakthrough of Karun Nair. And after 106 overs, India A are 479 for 6. So Shardul Thakur out in the middle, Harsh Dubey joining him. Thakur on 22. And we'll just run you through the wickets that have fallen this morning. Well, Dhruv Jurel was the first one to go. Caught at first slip off Ben McKinney for 94. Ajit Singh Dale picking up that wicket. And then Nitish Kumar Reddy caught again by Rue, this time with the gloves for 7 off the bowling of Eddie Jack. That fell when India A were 445 for 5. Karun Nair brought up his double century, and that was a fantastic one until we just saw him nick off again, caught by Rue. Ahmed, oh, they could have a mix-up here. He's got to be quickly back, and the throw hits the stumps from Zaman Akhtar, but Dubey gets home and they scamper through for an overthrow. Talking of the Oval, as you were a moment ago, I recalled a test back in 1979. India nearly won it. Wonderful run chase. Anil Gavaskar got a double 100. Goward got 100, I think, in the first innings for England. And it was a really thrilling chase. I'm sure there'll be a few people nodding their heads at their television set in appreciation. That's elegantly driven square. Yeah, stays beside the ball there, Harsh Dubey. Will get himself to open his account as well. You're listening to a live cricket here on day 2 in Canterbury as England Lions take on India A. Myself, Nikki Chowdhury, alongside Dan Whiting. That's driven pleasantly out to long off. Is that Emilio Gay out there? Yeah, that ball was really... No, that's Ajit Singh Dale, but that ball was
following Emilio Gay yesterday, that's for sure. I felt like he had a magnet on him. Doobie just adjusting and playing that, dropping it down into the offside. Yeah, Emilio Gay, having just made the moves this season from Northamptonshire up to Durham, gone up to the northeast. That's cut away. And that will just be a single. That's Emilio Gay out on the cover boundary, out near the grassy knoll. Again, cut through the other side. This by the right-hander goes out to Eddie Jack down the hill. The wind's playing havoc here. There's cups being blown around. There's coffee cups. I'll conclude the over. 484 for 6 India A. And Shardul Thakur and Harsh Dubey just getting together in the middle. And I'm pretty sure there is going to be a little bit of acceleration headed our way pretty soon, because by the way how Shardul has been playing, we can just get senses of that as well. And Harsh Dubey out there in the middle, also looking a little bit itchy to get himself running. Well, this one just jags back, and there's a very faint shout there from Zaman Akhtar. It's not convincing enough, and it's just jagging back. I was going to ask Nikki, at what point do you think that India A pull the plug? I mean, do they want an awkward 20 minutes at the England Lions just before lunch, or do you think they'll see it through, and are they after match practice? It's a hard one because they also want match practice out there, right? Because Shardul Thakur would also want to get some time out there in the middle, as would Harsh Dubey. Really forces that one, won't get it away at mid-on. Brilliant work by Josh Hull. Yeah. It's a long way down to the ground if you're Josh Hull, that is for sure. But you know what, 484, 500 definitely. I would quite like to say, I'd say 550. Yeah. I mean, it's a good surface as well, and it's a fast-scoring ground. I think you have to take that into account when any declaration comes into it, don't you? Watches it through. Crouches down. Shardul Thakur. Harsh Dubey from Vidarbha. 22 years of age. Bowls a bit of left arm spin as well. Or slow left arm, sorry. And he's picked up the most wickets in the Ranji Trophy in the 2024-2025 season. 69 wickets from 10 matches. Can you believe it? Wow, that's a decent effort, isn't it? This one just angling back into the right-hander, and that will come off the thigh pad. It should be signalled a leg by, and it is. 485 for 6. And of course, Harsh Dubey playing for the Sunrisers Hyderabad in the Indian Premier League. Still going on, the IPL, although we're into the last legs of it. Qualifier 2, and then the final, which we already know of, Royal Challengers Bangalore, or Bengaluru, are already in. Who will they face? Well, yet to find out. On the move defends this one, does Harsh Dubey. Still bright sunshine here at Canterbury. There's a few wispy clouds going sort of over back towards the city centre, over towards the cathedral. But still a warm day. Just dug out, bit of bottom hand coming through a bit early on the shot there from Harsh Dubey as the ball angles back into the left-hander. That will conclude the end of the over, and India A 485 for 6. Thakur on 25, Dubey with 2 to his name, and of course this is the first game of 2 between England Lions versus India A.
on the India A Tour of England. I've got next game, which will be up in Northamptonshire. Next. Week when Sai Sudarshan and Shubh cut the single off
Thakur just relaxing a bit there at the non-striker's end. Yeah, he was on his heels a little bit, wasn't he? Yeah, a little bit late through to the call. But yeah, I don't think they're going to be showing him much respect. Swept, but doesn't get hold of it. A little bit of, possibly off the glove or the bottom edge perhaps, and the ball dribbles away up towards the Leslie Ames pavilion for a single. Zamanakta's been busy there. He's bowling at one end and running around all over the place at deep square, as that's pushed down the ground for a single. Nice breeze now. Not far from the coast here. You've got Margate just up the road. And are you working for Tourism Kent today? well, you know, I don't like to say, Nikki. But working 2 jobs on one day. I'm not sure that's allowed. Broadstairs, Ramsgate on the Isle of Thanet. It's a nice part of the world down here. Well, if you are in this part of the world, get yourself down to the ground. Yeah, there's the floodlights on the stream as well. They're extendable floodlights, so when they do actually come on, they do extend upwards. And the one... Akhtar in now for the 4th over of his morning spell. Nicely forward, Harsh Dubey. Actually gets close to the ball this time, slightly wide of the crease from Akhtar, this delivery. As he comes around the wicket to the left-hander. Lots of picnic blankets thrown about as well. Yeah. Yeah, the floodlights here could, on my last visit, could do with a little bit of oil. Two slips in place for the left-hander. Straight to line on his toes. And he rides with the ball here, Dubey. .76 miles an hour. Yeah, he's bowling well within himself, because generally he's can add another 10 miles an hour onto that. Did see him in the early 80s, especially yesterday, as he started his spell. This one again. Straight to line. And I think this is the line where Akhtar wants to stay. He's got to keep Harsh Dubey in that mind where he's thinking, do I play at it? Do I let it go by? He's literally just come out there into the middle. Shardul Thakur has got a mind of his own. He's just thinking, I'm going to let my hands through it. If I'm going to slash, I'm going to slash hard, which is absolutely fine. Off the hips down towards a deep square leg. And it will be stopped off for just a single. And we lose the floppy hat as well. What's the English cricket summer without a bit of floppy hats out on display? Yeah, I was always a cat person. See, you know, when you've got long hair, right, you don't see many women donning the floppy cap, apart from Alyssa Healy, who does do that well because she's managed to figure out a cool method. Beautiful looking shot, but that's gone straight to mid-off and it will be caught. And Shardul Thakur will have to go. He scored 27, tried to get that up and over mid-off, didn't quite get the elevation. The ball took a little bit of height from Akhtar. And, well, India lose another wicket. Yeah, Dan Mosley with the catch there. And he absolutely nailed that. He hit it really well. And it was a good catch at mid-off. Didn't keep over the ball, though. And if you hit it in the air, there's always the chance you're going to be out. And Shardul Thakur has to depart for a bright and breezy 27. Short little cameo from him. And India A are 494 for 7. 2 wickets now for Zaman Akhtar. Struggled yesterday and he's come in and got the breakthrough of that big wicket. Karun Nair
He went for 204 and just now Shardul Thakur caught at mid-off. Nice easy catch there for Dan Mosley. Goes reverse cup, Aussie style as we like to say here in the commentary box. And that's 2 for 73 there for him so far, which means Anshul Kamboj comes out into the middle to join Harsh Dubey. Yeah, often when it's drilled at your face like that, you've got no option but to go Aussie style. Got to save the face, save the features. Yeah, otherwise it's a trip to the dentist. Or the plastic surgeon. Maybe plastic surgeon first, then dentist. If you're really unlucky, it's both, isn't it? Yeah, I don't want to even imagine that. Yeah. Well, he's got a smile on himself now, has Zaman Akhtar. Looked a bit serious earlier in the day. And it's funny how just getting a few wickets can just relax you a little bit. He's competitive. He'll want to do well here. Called into the squad late. Had a good series in South Africa for the England Lions. But he's a competitor, Zuma. So that was clearly the plan in the day. And talking about plan in the day, we have a change in bowling. Ajit Singh Dale is going to be coming in to the attack again from the Nackington Road end. And he'll be back again. Picked up a wicket this morning of Dhruv Jerome. That was caught at first slip by Ben McKinney. That was his first wicket of the game. And he's in again now with his black headband, the style that we've seen since COVID. Because no one could go to the hairdressers and then they realised they had to get their hair out the way. Here he comes. Clipped away nicely here by Dubey, and that will find the boundary. Beautiful head position, really leans on top of it and times it beautifully, and that will take India A to 499 for 7. Yeah, I think there was also another reason why the headband became popular, because the law on saliva on the ball changed as well and has remained in place ever since. And you can use the sweat from the headband to keep the shine on one side of the ball to aid swing. Back of the length, and this will find Rayan Ahmed down towards fine. And that big round of applause means that it's 500 runs up on the board here in Canterbury. India A have got to that landmark. 500 for 7. And it's been a brilliant display of batting to have watched over the course of the day and a half. Are we at that position to say it's day and a half? Day and a third, almost. Day and a third now. It's just getting too mathematical for me. Of course, that knock of 204 from Karunaya being the highlight. Leans into it nicely, and that should race away on this quick outfield here in Canterbury for 4 more runs. And Singhdale comes back into the hit for 2 boundaries off the first 3 deliveries. And India A 504 for 7. Yeah, that's a lovely shot there. Just lengthen it a little bit inside out perhaps, but it was a gorgeous bit of timing and runs away up the hill. The Jeep just going a little too full perhaps. The boundary, but he's really had to come round from deep backwards square leg here. Yeah, he's impressed me with ball and in the field, Eddie Jack. Got a good one down at Hampshire. The Major from 40 Towers will be happy. And that will get
An outside edge and run down towards the boundary. 4 more runs. That is 3 boundaries in the over so far. And of course, just having to use the pace here of Ajit Singh Dale. There's not much requirement of the batter to try and go hard at it. Even a fine nick is going to fly by. Yeah, moral victory to the bowler. But, as batters often say, look in the book. Reads the same in the book as that elegant cover drive earlier in the over, doesn't it? Is he going to come back with the final ball in this over? Singh Dale on the Nackington Road end. But gets him playing at it, and that will conclude the end of the over. Slightly expensive here from Singh Dale. 3 boundaries from it. A couple and a single. 510 for 7 here, India A. And again, just starting to see a little bit of deflation amongst the lines. Maybe it's that whopping number of 510 on the board here, Dan. Yeah, it's also hard when you've been out in the dirt for 112 overs. It's difficult, you know, and that's why people talk about the new ball. But when it's talking about the second new ball or the third new ball, it's difficult to get yourself up for it. And I don't care how many new balls you get. When you've been out in the field for a couple of days, it's tough, hard work. It's the engine room, it's the coal face of cricket. It is James Drew just getting his helmet passed on to him. Doing some sort of adjustment. Rayan Ahmed to continue. That's just pushed for one, actually. Thought it was pushed back to the bowler, but it's just gone away with the slope, and they amble through for what's a rather easy single. Just over 15 minutes to lunch. Ahmed keeping Campbell Genshaw honest there. It's played out to long on. Another single. Another one onto the total. This is looking imposing now from India A. 512. The score's up to. Defended by Dubey. Yeah. He's on to 16 from 24. Dubey expecting Rayan Ahmed to bowl the leg spinner. He's playing for the leg spin, but he's actually taking it away from the left-hander more so. Again defended into the offside. Passing vehicle from the emergency services. India A 512 goes up the old Dover Road behind us. Onto the pads and just dribbles out into the leg side. That's the end of the over. 113 overs gone now. 512 for 7. And it's, as I said, it's an imposing total underpinned by a wonderful 204 from Karen Nair. And he was aided and abetted by 90s from Sarfraz Khan and Dhruv Jurel. And they have been the mainstay of this India innings. Absolutely. Well, it's encouraging to watch, right? If you're an Indian cricket fan and you're seeing the likes of Karan Nair scoring double centuries, and you're also seeing Dhruv Jurel score 94, Sarfraz Khan as well getting 92. 512 for 7. India the A big summer as ahead. Dan Mosley comes back into the attack. Change in bowling here. Dan Mosley coming in to One the of attack for only the first 2 time spin bowling this options in morning, this as England we Lions are lineup. 15 minutes Scored 8 away overs so from far, lunch. none for 48. And Anshul इनको अटैक में शामिल किया गया था जब just 6 days ago, Dan, he was जो playing मेन in the पेसर्स की IPL. शुरुआत थी वो झेल चुके Chennai थे Super Kings भारत versus के Gujarat बल्लेबाज Titans. और He got इंडिया ए 3 के for बल्लेबाजों ने 13 उसके in बाद that game. इनके बॉलिंग पर जोरों शोरों से रन बनाए ये वॉर्विक शायर का ऑफ स्पिनर है और Titans got इंडिया ए के 3 for बल्लेबाजों ने 13 उसके in बाद that game. इनके बॉलिंग पर
जोरों शोरों से रन बनाए। स्पिनर्स को इंडियन वॉर्विक शायद ऑफ स्पिनर को बहुत बड़ा इशू एक कभी बल्लेबाज मिला, और उसने उसके वो बाद शायद थ्रेट थे। और बॉलिंग पर आपने देखा होगा पहला बॉल स्पिनर्स को इंडियन फ्लाइट वॉर्विक चले ऑफ स्पिनर को बहुत बड़ा इशू कभी खास मिला, बात है उसने उसके वो बाद शायद थ्रेट थे। और जितने भी स्पिनर आपने देखा होगा पहला बॉल फ्लाइट्स को इंडियन वॉर्विक चले जिस तरह की बॉलिंग करी खास बात है उसने वो शायद थ्रेट थे। लेकिन वनडे का ज्यादा स्पिनर आपने देखा होगा पहला बॉल फ्लाइट्स को इंडियन वॉर्विक चले जिस तरह की बॉलिंग करी खास बात है उसने हमेशा फ्लाइट वाले स्पिनर मिलेंगे। इंग्लैंड का इसी तरह का कल्चर है। जी हाँ, 23 साल के खिलाड़ी हैं डैन मूसली। वैसे प्लेइंग रोल बैटिंग ऑलराउंडर की है। ट्रैप्ड, बिग अपील फ्रॉम मूसली बट नॉट आउट says the टीम ट्रैप किया हो। लेकिन नेक्स्ट अप इस बार एक फुलर डिलीवरी बट कदमों का अच्छा इस्तेमाल और फ्लिक किया उसे लेग साइड पे। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं बॉलर, लेकिन मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था इनकी बैटिंग से रणजी ट्रॉफी में। जिस तरह से ये खेल रहे थे, खासकर विकेट ऐसा था कि वहाँ पे अच्छे अच्छे बैट्समैन, नायर बहुत अच्छा खेले और उसके बाद इतने कॉम्पैक्ट ही खेले। रन ज़्यादा नहीं थे लेकिन खेलने के तरीके से पता लगता था कि इनको आइडिया है कि बॉल को मैरिट पे कैसे खेलते हैं और डिफेंस इनका अच्छा है। उसी डिफेंस को दर्शाते हुए बॉल को नच किया एक सिंगल के लिए। ओवर की समाप्ति, इंडिया ए 518 7 विकेट के नुकसान पर। $518 for 7, India A. With 24 overs into day 2 of this first unofficial test in Canterbury, Rehan Ahmed. Harsh Dubey goes for it. He's looked to sweep that one. It falls in between the gap between long on and deep mid wicket. And the batters will come back for 2. Harsh Dubey moves on to 23. He's already got a few boundaries, 3 fours to his name, looking to attack the spinners. मुझे लगा थोड़ा दूर रह गए बॉल से और उतना टाइम नहीं कर पाया जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन वहाँ कोई फील्डर नहीं था तो उस तरह कोई बात नहीं। मिसिंग लेग स्टंप, ये भी शायद अपील कर रहे हैं कीपर साहब। कीपर कुछ जोश में ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये काफी देखते आ रहे हैं हम कि कीपर्स की अपीलिंग। आप जब अंपायरिंग करते हैं, कुछ अगर हद से ज्यादा एंथुजियास्टिक कीपर्स हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं उसमें? मैं स्माइल सबसे अच्छा वेपन है और मैं बात भी कर लेता हूँ कीपर से। घर में सब ठीक हैं सब, तो मैं बहुत जल्दी दोस्ती करता हूँ कीपर से, क्योंकि कीपर आपको ट्रबल कर सकता है मैच में अगर आप उसको हैंडल नहीं करेंगे। बिकॉज कीपर और एम्पायर ऑलमोस्ट सबसे पास हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं को पता होता है। तो कीपर को हमेशा कई बार कोड ऑफ कंडक्ट की भी नौबत आ जाती है, क्योंकि वहीं पे माइक्रोफोन होता है, वहीं पे आवाज़ें आती हैं। हमने ऋषभ को कितनी बार सुना होगा, बट ऋषभ को आइडिया, क्योंकि जितने भी वो प्लेयर है जो सीजनड है, जो खेल चुके हैं, उनको पता है कि कब कहाँ कितना बोलना है, कहाँ पे गाइडलाइन है। तो कीपर को कंट्रोल करना जरूरी होता है। Anshul Kamboj goes in the air, but they do have cover in the deep for Rehan Ahmed, and that means the batters will get a single. एज एन एम्पायर अगर आपने कीपर को फ्री छोड़ दिया तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा सारी टीम को कंट्रोल करना, क्योंकि वो वहां से ऐसे ऐसे इशारे करते हैं बाकी प्लेयरों को। इस ख्याल को रखिएगा, क्योंकि मैं अब वापस आने वाला हूँ आपसे कुछ टफ सवाल पूछने के लिए। फिलहाल ओवर के अंत 115 ओवर के बाद इंडिया ए 522 7 विकेट के नुकसान पर। $522 for 7, India A. First game of what is one of 2 unofficial tests they're playing against the England Lions. Anil Chaudhary
continues to be with us in the com box. और हम बात कर रहे हैं विकेट कीपर्स की, कभी ओवर एक्साइटेड विकेट कीपर्स की. आपके करियर में अब तक इंटरनेशनल्स हो, फर्स्ट क्लास हो, कौन से वो विकेट कीपर है जिन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी दी है आपको उन्हें कंट्रोल करने के लिए? अभी तो चेंज हो गया, पहले पहले दिनेश कार्तिक जो धीरे धीरे पता लगने लगा कि एम्पायर मतलब प्लेयर लोग भी जज करते हैं एम्पायर को. जब आप नए आते हैं इंटरनेशनल एरिना में तो या आईपीएल के लेवल पे तो वो आपको टेस्ट करते हैं पहले. तो शायद मैं टेस्ट में पास हो गया तो बाद में दिनेश और हम लोग ठीक हो गए. पार्थिव हमारे साथी कमेंटेटर हैं, बिल्कुल. वो बहुत स्मार्ट प्लेयर है, लेकिन वो हमेशा ना आपको क्वेश्चन करते रहेंगे. लेकिन आप ठीक आंसर दो तो इज गुड, बट आपको छोड़ेंगे नहीं किसी पॉइंट पे अगर आप मिस कर गए तो. क्योंकि एक तो उनका जो क्रिकेटिंग आईक्यू है वो शानदार है. इज वेरी शार्प रूल्स में और लाइन जज करने में. बट मैं उनसे बात करता लगना चाहिए कि हाँ ये आदमी कोशिश पड़ता है कप्तान को. अगर वो अच्छे नहीं है डीआरएस में तो आपकी टीम की पूरी प्लानिंग गड़बड़ हो सकती है. आपको डीआरएस खराब कर सकते हैं. आपको पता लगा जरूरत है तब आपके पास बचा ही नहीं. तो कीपर का तो बहुत रोल है आज की डेट में क्रिकेट में. मॉडर्न डे क्रिकेट में कीपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी हाँ, अब सिर्फ आपके ग्लव वर्क और आपकी बल्लेबाजी ही काफ़ी नहीं है. आप कितने शार्पली गेम को देख पा रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से अपने कप्तान की मदद कर पा रहे हैं डीआरएस में. बिग फैसेट ऑफ विकेट कीपिंग. रेहान अहमद की ओवर की आखिरी गेंद सेफली प्लेड बाय हर्ष दुबे. 530 for 7. With Shubman at the helm, Indian cricket enters a bold new era.
Watch India Tour of England, 20th June at 2:30 p.m. on Jio Hotstar. 20th of June, that's when the action kicks off. 5-match test series, which you can watch only on Jio Hotstar. It's the start of new times in Indian Test cricket. Shubman Gill, set to become India's 37th Test captain, taking over after the retirement of Rohit Sharma as India embark on a new World Test Championship cycle. 20th of June. Just a couple of Fridays away. Even as India A continue to make hay in Canterbury. 530 for 7. England Lions had asked them to bat on day 1 of this first unofficial test. Anshul Kamboj, Harsh Dubey at the crease. दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि रन जल्दी आए. कंपोज भी अच्छे कंट्रोल में और विश्वास में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से ड्राइविंग कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप कंफर्टेबल हैं, बिकॉज खासकर ऑन ड्राइव अगर आप कर पा रहे हैं तो आपका कंट्रोल है, आपको आइडिया है कि किस पेस से बॉल ऑफ द विकेट आ रहा है. अच्छा साइन है इंडिया ए के लिए कि उनकी बाद का बैटिंग ऑर्डर भी कितना कंफर्टेबल है इस बॉलिंग पे. और आगे की तरफ देखते हुए अच्छा साइन इंडियन क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि यही है वो खिलाड़ी जिनको आप आशा करते हैं कि यही खिलाड़ी आने वाले टाइम में आपके मेन स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं. बैटिंग डेप्थ की जो ज़रूरत है, ख़ास तौर से जब कठिन ओवरसीज टूर्स होते हैं, वो 2018 का टूर याद आता है जहां पर इफेक्टिवली सैम करन ने सीरीज बदली थी अपने बल्लेबाजी से. जी हाँ, ये जो तैयारी है इंग्लैंड की, पोजीशन इसको बहुत ध्यान से देख रहा होगा. साइकोलॉजिकली बहुत चीज़ें चलती हैं. वहाँ का मीडिया ये सब मैचेस को अपने हिसाब से कवर करेगा. अगर इंडिया डोमिनेट करेगा तो उनको ज़्यादा चांस नहीं होगा. ऑलरेडी वो परेशान है कि ऋषभ पंत ने इतना अच्छा 100 किया है बाद में एंड ही विल बी आवर मेन प्लेयर. और ऋषभ पंत वैसे भी बहुत खतरनाक टेस्ट प्लेयर हैं. End of the over, 532 for 7 as we inch closer towards the lunch break. 28 overs into this first session of the second day's play, which began with India A on 409 for 3. So they've added 123 runs in 28 overs so far on day 2. अब जल्द नजरिया हमारा गेंदबाजी पर भी शिफ्ट होगा. बल्लेबाजों ने तो काम किया है, काफी बल्लेबाजों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि हम हैं लाइन में और हम हैं तैयार अगर ज़रूरत पड़े हेडिंगली आते आते. लेकिन तेज़ गेंदबाजों को देखने में भी एक काफ़ी दिलचस्प फैसेट रहेगा. इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रेटजी हमेशा खास बात रही है. जो बॉलर बहुत एक्यूरेट हैं उनको हमेशा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्विंग और सीम को तलाशने की ज़रूरत नहीं है. वो अपने आप होती है. आपने अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल डालनी होती है. इसलिए मुझे लगता है कि जैसे आकाशदीप इस टूर पे हैं, हालांकि इतना बड़ा नाम उनका नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही उन पे उम्मीद है कि इस तरह का एक बॉलर जो विकेट टू विकेट बॉलिंग डाले और टीजिंग लाइन डाले ऑफ स्टंप और अराउंड ऑफ स्टंप, जो पीछे टेस्ट मैचेस में डाली उन्होंने होम कंडीशंस में भी, बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं. हालांकि दर्शकों को लगता होगा कि उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इस तरह की जो लाइन है, जैसे बहुत पहले कभी मदन लाल या बलविंदर सांधू, इस तरह के जो बॉलर हैं जो सिर्फ अच्छी लाइन पे बॉल डालें, कंडीशंस वहाँ चेंज होती रहती हैं और सीम और स्विंग ऑलरेडी वहाँ पे है, आपको बस अच्छी जगह बॉल डालनी है. इस पहले मुकाबले का हिस्सा नहीं है आकाशदीप, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जो दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट है जो कि खेला जाएगा नॉर्थहैम्पटन में, 6 जून को शुरुआत होगी उस मैच की, उसमें शायद उन्हें खेलने का मौका मिले. मैं उनको लीड्स के हिसाब से बात कर रहा था कि टेस्ट मैच में उस तरह का बॉलर जो अच्छी लाइन पे बॉल डाले, बस बाकी चीजें सब अपने आप होंगी. जी, उसी के प्रेपरेशन के तहत नॉर्थहैम्पटन का मुकाबला शायद अहम आकाशदीप के लिए. और उसके बाद एक और मौका रहेगा इन खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब आने वाले हफ्ते में जब सीनियर स्क्वाड पहुंच जाएगी इंग्लैंड, तो एक आखिरी मैच है इंडिया वर्सेस इंडिया ए. वो भी एक खास नज़ारा होगा. एक थोड़ा सा फर्क है, जो लोग इंग्लैंड नहीं खेले कभी काउंटी या कभी किसी टूर पे नहीं आए हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा लेंथ का फर्क रहता है, क्योंकि पिचेस आपको ग्रीन दिखाई देंगी, तो कई बारी बहुत सारे फास्ट बॉलर जोश में आके बॉल को थोड़ा उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो बैकफायर करता है. यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ आगे रखनी पड़ती है, वो एक खास बात है इंग्लैंड की, सिर्फ इंग्लैंड की. Anshul Kamboj sees the last ball of Rehan Ahmed's over out. 533 for 7, and that will be lunch on day 2
of this first unofficial test between England Lions and India A. India A, who started day 2 on 409 for 3, did lose the 4 wickets, including that of Karun Nair, but not before he completed a glorious double century, 204, to the man hoping to come back to the Indian Test side after 8 years. India have added 124 runs in this session from the 29 overs. 6:10 p.m. IST is when we will resume. That is the tale of the India A batting lineup. 204 from Karun Nair. There were 90s. Sarfaraz Khan fell in the 90s on day 1. Jurel on 94. This morning, अब तक ये मुकाबला इंडिया ए के पक्ष में. तो आपके 2 बल्लेबाज 90s में आउट हुए, लेकिन अच्छी बात है कि 90 बनाए उन्होंने और अच्छी स्ट्रेंथ उन्होंने इंडियन बैटिंग को दी और इंडिया ए बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है. Yes, comfortable. 533 for 7 is where it stands for India A at lunch on day 2. But here is a look at the highlights from day 1 in Canterbury. Be sure to join us at 6:10 p.m. IST. इंडिया ए इंग्लैंड लायंस इन्हें कहते हैं बनाम इंडिया ए और बाहरी किनारा यशस्वी जय. Great shot, Sarfaraz Khan. This is what he used to do all the time. This is what he waits for, the bad balls and punish them to the boundaries. मोटा किनारा था, रन 4 मिलेंगे. That was not enough. This is enough. Good enough. अच्छा shot.
सरफराज खान, खूबसूरत शॉट है। अवे स्विंगिंग डिलीवरी। 86 पर 2 भारत। 27 ओवर समाप्त हो चुके हैं और अंपायर्स ने अब लंच की घोषणा कर दी है। पहला अनऑफिशियल टेस्ट इंग्लैंड लायंस और इंडिया ए के बीच। इंग्लैंड लायंस ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दोनों भारतीय ओपनर्स को आउट किया। उसके बाद से सरफराज खान और करुण नायर, भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट के ये 2 दिग्गज हैं, इन्होंने पारी को संभाला है और तीसरा विकेट नहीं करने दिया है। पहला दिन दूसरे सेशन का खेल शुरू होने वाला है। सरफराज खान और करुण नायर ने एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी है और दूसरे सेशन की शुभ शुरुआत हुई है। पहली ही गेंद पे चौका मिलेगा और यहां करुण नायर शॉट्स का सिलसिला जारी रखेंगे। रन यहां बन रहे हैं भारत के लिए। ताकत लगाई नहीं थी पर चौका मिलेगा। बेहतरीन शॉट एक बार फिर से। Karun Nair dispatches that away to the square boundary. 4 runs to Karun Nair. Flicked and Karun Nair gets another boundary. Wide outside off and Karun Nair tucks into it. Goes to the boundary. 4 runs and 50 for Karun Nair. Well played, Karun Nair. Very well played. Ooh. Sarfaraz Khan gets a bat to it and it goes for 4. Streaky. Karun Nair will get 4 more. Ooh, that was close. Gets an inside edge and it runs away. ये शॉट बहुत बढ़िया तरीके से भी खेलते हैं सरफराज, बहुत लेट खेलते हैं, इसलिए वो गैप भी ढूंढ पाते हैं। लीजिए, सरफराज ने भी 50 रन पूरे कर लिए हैं। आगे बढ़ के वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन लगाए हैं। कमाल के बैटर हैं भैया। ये बहुत दूर फेंकी है भाई सरफराज ने। यहां तो खेल रहे हैं भाई सरफराज। There he goes again. शॉर्ट बॉल, रैंप और एक और चौका इस ओवर में। 50 रन दिए अभी अख्तर ने। 188 for 2 after 48. शॉर्ट बॉल, रैंप और एक और चौका इस ओवर में। बढ़िया कवर ड्राइव था ये और करुण नायर लगातार अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, बेहतरीन शॉट्स खेल रहे हैं और बता रहे हैं कि काबिलियत, तकनीक की कितनी महत्व होती है। बेहतरीन रिवर्स स्वीप लगाया, अच्छा चौका लगाया और करुण नायर अच्छे ढंग से पोजीशन में आके शॉट्स को लगाते हैं। बेहतरीन पुल शॉट यहां करुण नायर ने लगाया है। सरफराज को पता है कि चौके कैसे लगाए जाते हैं और सरफराज वही बता रहे हैं कि मुश्किल हालात आपके लिए हैं और मुश्किल मैं पैदा करता रहूंगा, शॉट्स लगाता रहूंगा। और ये सेकंड स्लिप के फील्डर से यहां चूक हो गई और ये चूक बहुत बड़ी है। पता नहीं कहां चूक हुई इनसे। डाइव थोड़ा हार्ड गए गेंद पे मुझे लगता है। एक रन के साथ ही ओवर समाप्त। 227 पे 2 और मैदान के नजारे ये बता रहे हैं कि चाय काल के विश्राम का समय हो गया है और ये सेशन भारत के लिए बेहतरीन रहा है। भारतीय ए टीम के मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करी है, बेहतरीन साझेदारी की है। एक बल्लेबाज 91 पे नाबाद हो और सरफराज खान 92 पे नाबाद हैं। उन्होंने बताया है कि भारतीय बल्लेबाजों ने कितना शानदार प्रभाव दिखाया है। Now something on it, yes. Sarfaraz Khan is gone 8 short of 100. Perfect start for the England Lions in the final session. Gloves one, smart catch by the keeper and the captain. जुरेल भी बहुत बढ़िया विकेट कीपर बल्लेबाज है। उनका टेस्ट में भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की।
है। बहुत बेहतरीन 100 यहाँ पर करुण नायर के बैट से, बढ़िया शॉट, 2 रन बिल्कुल मिलेंगे। शतक बनाया, टीम इंडिया के लिए वापसी कर रहे हैं और पहले ही मैच में शतक। Yeah, outstanding from Karun Nair. Dear cricket, give me one more chance. He's got his second chance and he's taken the most of it today. He's cashed in here in Canterbury. It's a 24th first class 100. Edged, that was close. Driven more confidently this time. That will be 4 more for Karun Nair, and that comes with proper confidence. Edged again, and he'll get another 4 via an inside edge. Rehan Ahmed back into the attack, and Karun Nair, who's enjoyed the few overs of spin that Rehan Ahmed had bowled in the second session. आईपीएल से सीधे रेड बॉल क्रिकेट में आकर खेलना थोड़ा मुश्किल होता है एडजस्टमेंट करने के लिए, पर करुण नायर अपना क्लास दिखा रहे, अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे। एक और छोटी गेंद, और इस बार करुण नायर ने There comes a reverse sweep now. आसानी से कलाइयों का इस्तेमाल और 150 रन पूरे करुण नायर के। फिर से उन्होंने दिखा दिया है कि ये मौका उन्हें क्यों मिला है, उन्होंने ये मौका कमाया है। Rehan Ahmed again, just losing the length of the ball. Short ball recognized early by Dhruv Jurel. Tossed up straight over the bowler's head और चौका। और मौके पे चौका लगाना ध्रुव जुरेल भी जानते हैं। अगर मौका मिले तो अच्छा कर सकते। और मौके पे चौका लगाना, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये जानते हैं, फिर से चौका लगाया है, अपना 50 सा लगाया है और बताया है कि कीपर की जरूरत है तो ध्रुव है। जुरेल बता रहे हैं कि मुझे तो ये तरीका आता है। जो करुण नायर कर रहे हैं, बेहतरीन शॉट लगाया, स्वीप का जलवा दिखाया। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट। दोनों खिलाड़ियों में, दोनों बल्लेबाजों में प्रतिद्वंद्विता चल रही है कि चौके कौन लगाएगा। ये मामला आसान हो रहा है और आसानी के साथ शॉट्स भी लग रहे हैं। और ये कवर ड्राइव, ऐसा शॉट है जो कोई फील्डर कवर ना कर पाए। बेहतरीन शॉट के साथ ही इस ओवर की समाप्ति करेंगे चौके से। Driven, looked as assured as he has through most of this day, and that is where it's time on day 1 of this first unofficial test. India A 409 for 3 after being put into bat by England Lions. They lost a couple of wickets early, but after that it has been the Karun Nair show. आज है वो बड़ा दिन और इसीलिए आज ये बैठक यहां बुलाई गई है। फॉलो द ब्लू सिलेक्टर्स, मीट द बिग सिलेक्शन क्वेश्चंस। इंग्लैंड के विरुद्ध उन 5 टेस्ट मैचेस के लिए भारत की उस टेस्ट स्क्वाड का चयन जिसके इर्द गिर्द सवाल काफी हैं उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में, व्हिच इज व्हाई वी हैव एक्चुअली कन्वीन्ड this meeting here with the former national selector Sabah Kareem. Welcome along, Sarandeep Singh. Welcome. And chairperson of the national selection committee, former chairperson Mr. Kiran More as well. Welcome along, gentlemen. सबसे पहले तो agenda set कर लेते हैं. What are the agendas of the meeting? Because
there were quite a few points, कई सारी ऐसे चर्चाएं थी जो हो रही थी उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद. ये है सिलेक्शन निर्णय जो सिलेक्टर्स लेंगे आज और हम आप सबसे आपकी राय जानेंगे. फर्स्ट, हु शुड बी इंडियाज नेक्स्ट कैप्टन? भारत के अगले टेस्ट कप्तान कौन होंगे? सबसे पहले वो. एंड द न्यू ओपनिंग पेयर इन टेस्ट फॉर इंडिया. नई सलामी जोड़ी क्या होगी भारत की? दैट विल बी नेक्स्ट. हु विल फिल विराट्स वॉइड एट नंबर 4? सबसे महत्वपूर्ण सवाल शायद इन सब में, विराट कोहली की जगह नंबर 4 पर अब उस लाइनअप में कौन खेलेगा? इंडिया स्पिन ऑप्शंस फॉर द इंग्लैंड टूर, कौन होंगे वो स्पिन ऑप्शंस? रविचंद्रन अश्विन अब है नहीं. ऑप्शंस फॉर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स. पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स नीतीश कुमार रेड्डी, क्या उन्होंने इतना भरोसा दिखाया है पिछले कुछ मुकाबलों में इस सिलेक्शन कमेटी में? एंड देन व्हाट विल इंडियाज पेस बैटरी लुक लाइक ऑन दिस टूर? क्या उस पेस बैटरी में कुछ बदलाव होंगे? ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह वहां होंगे, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कौन से ऐसे नाम जिन पर चर्चा. लेकिन लेट्स बिगिन with perhaps the first question of them all that has been lingering in everyone's mind, gentlemen, and I think we'll begin with you, Savabhai, with that. Who should be India's next test captain? The four faces that you see there, of course, KL Rahul. Jasprit Bumrah has led India in the past in test cricket. So has KL Rahul, actually. Rishabh Pant, the prime contender, a key member of that Indian test side. And then there's Shubman Gill, whose name perhaps is on top of that list. For you? Yes, I reckon this is the first time, maybe in the past 2 decades, that the selectors have to ponder over this call. Yeah. Who should be your next test captain? Many times before this, you must have noticed, Tanay, that after once MS Dhoni retired, easy transition was Virat Kohli. Even before MS Dhoni, we had Saurav Ganguly. After Saurav, Rahul Dravid became the captain. Then you had Anil Kumble. So there were people just waiting, and they had, and the Indian team have always had possible candidate as vice captain willing to take over the captaincy mantle. But this time around, that is why the selectors have to spend some more time on this. Ideal candidate would have been Jasprit Bumrah, but because whatever we have learned from the press, and there's been a lot of speculation, and that Jasprit Bumrah may not be available for all the 5 test matches, and हमने देखा था पिछली बार in Australia. He wasn't able to play all the 4 test matches or 5 test matches. So that is why I think selectors will have to think again that if not Jasprit Bumrah, then who are your potential candidates? So here you have Shubman Gill, you have KL Rahul, you also have Rishabh Pant. I would, because you're looking at a new WTC cycle, then I will go with a young, talented leader, that is Shubman Gill. Although he's yet to solidify his credentials at the test level, but still I would like the selectors to make a very bold move and go ahead with Shubman Gill. We have seen his leadership skills, especially in the shorter format for GT, and I think he seems to be in a very happy space when he's leading a side, and I think that should really bode well for the Indian team. All right, one former national selector has said कि शुभमन गिल होने चाहिए उनके लिए अगले टेस्ट कप्तान. सरनता जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन उसके पहले एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल सिलेक्शन कमेटी, जब आपके पास ऐसे सवाल आते हैं, और एक्चुअली ये 2-fold सवाल है किरण सर. पहला सवाल ये कि आपके लिए आप किन में देखते हैं भारत के नेक्स्ट टेस्ट कप्तान? वो जो 4 विकल्प हमने वहां देखे वो. और दूसरा, जब आप बतौर चेयरमैन ऑफ नेशनल सिलेक्शन कमेटी ये निर्णय लेते हैं, तो उसके पीछे व्हाट इज द प्रोसेस लाइक, अगर आप वो भी समझा सकें तो. देखो, पहली बार तो मैं तो सरप्राइज हूँ दैट होल सिलेक्शन कमिटी एंड द वेक अप कॉल फॉर अस. फॉर मी, आई थिंक Shubman Gill is a good guy, talented player, outstanding player. All format is playing very well, but I'll still not put pressure on him. I would like to go with KL Rahul. KL Rahul, again, the experienced campaigner. I don't want to put a lot of pressure on Shubman Gill. Shubman Gill has not that done well in test cricket, So we need to I can do about talking about Shubman Gill getting into one-day captain format first. Shubman Gill has not played a lot of domestic cricket. I understand he come and won the Ranji Trophy for you, Punjab, and done very well for the domestic cricket also. So I think he has to do a lot of learning in the test match format, I think. So I think I'll go with KL Rahul for me because he has good experience.
इसके जवाब आज मिलेंगे उस सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद। लेकिन सवाल एक्चुअली और भी है। अगला सवाल है नया ओपनिंग पेयर इन टेस्ट फॉर इंडिया। अब नाम काफी सारे हैं। साई सुदर्शन ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, लेकिन वो व्हाइट बॉल में किया है वो प्रदर्शन। केएल राहुल से क्या आप कहेंगे? आप ऊपर आइए। अभिमन्यु ईश्वरन इतने वक्त से इस इंडियन टीम के फ्रिंजेस पर है किरण सर। ऑफ कोर्स यशस्वी जायसवाल एक प्रबल दावेदार, वो शायद अपनी जगह वहां रखेंगे, लेकिन उनके साथ दूसरे छोर पर उनके पार्टनर कौन? आपके लिए वो एक नाम? बिल्कुल, देखो आपके जो दो दावेदार है, आपने जो ईश्वरन पे पैसे कब से उनको बैक कर रहे हैं आप, आई थिंक उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आपको देखो ये सीरीज में आपको 3-4 ओपनर लगेंगे क्योंकि इंग्लैंड में खेल रहे हैं। ऐसा मत बोलो जॉकी, प्लीज नो। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किलें सबसे बड़ी कप्तान के लिए आ जाएंगी। I don't expect any miracles from this tour because India is going to struggle. I think India will take 2 years to make a good test team. That's what I'm going to do. I will have a lot of time for these youngsters. You have to create an opportunity for all these players. Sai Sudarshan, outstanding performance. Ishwaran, you have been backing him. Ruturaj Gaikwad भी है आपके साथ। तो आई थिंक ये तीनों ओपनर है, आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिएट करने पड़ेंगे अपॉर्चुनिटीज। सो ये टूर है आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी, जीतना है डेफिनेटली, और आपको ये जगह है। आपको यशस्वी जायसवाल तो आपने उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, बहुत बेहतरीन दिया है। आपके पास शुभमन गिल है, तो आई थिंक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आपकी ऊपर हो गया आपके पास। सो यू नीड ईश्वरन और यू नीड साई सुदर्शन। तो मैं तो लेके जाऊंगा साई सुदर्शन को साथ पे, बिकॉज साई सुदर्शन कैन बैट नंबर 3 ऑल्सो। जो जगह है विराट कोहली की, वो साई सुदर्शन खेल सकते हैं। एंड अगेन आई लाइक अ वे ही प्लेस हिज इनिंग। मुझे लगता है फ्लैशी नहीं है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। तो आई थिंक आपको इंग्लैंड सीरीज इज नॉट गोइंग टू बी इजी वन। सो आपको इनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। आप ऐसा समझो मत कि ईश्वरन जाके 200, 300, 300 कर देगा, कि साई सुदर्शन 200 कर देगा। यू गिव देम अपॉर्चुनिटी, आउट ऑफ दिस 2-3 guys, you will get good 3 openers or 4 openers. Also, Jockey or Nannu, I mean, I just want to put in here before we, the selectors sit and decide the 11 or the 15 or the 16. There are 2 basic facets to look at. Number 1 is one should start with this premise that one should not get carried away by recency in performances. Number 1. Number 2, you have to respect the pecking order which the selectors have made. When I say pecking order, it means all those players who have played regularly at the India A level or who have been part of this Indian Test side. So now I come in with Abhimanyu Ishwaran's name. You have Yashasvi Jaiswal, one solid left-hand opening batter, and then on the other hand, Abhimanyu Ishwaran has been part of the side for a number of years. He scored tons of runs at the domestic level. Whenever he has played for India A, he has always done well, even in Sena countries. And I think he has got a solid technique to negotiate the so-called vagaries of the English conditions, and it would be ideal to have a right-hand left-hand combination. So my pick would be Abhimanyu Ishwaran, and I'll go with Yashasvi Jaiswal, this kind of an opening combination. So, Bhaiya, you said that KL Rahul has to be come at number 3? No, I'm not looking at KL at number 3 now. I'm looking at KL at number 4. I'm saying that's something which we can. वो एक सवाल है, बट आपके लिए वो आपकी चॉइस क्या होगी? डेफिनेटली मैं अगर देख रहा हूँ तो मैं केएल राहुल को ही देख रहा हूँ। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं अगर अभिमन्यु ईश्वरन की स्ट्रेट अवे इंग्लैंड टूर के ऊपर एज अ ओपनर, आप एक एक्सपीरियंस ओपनर के साथ जाना जरूर चाहेंगे। यशस्वी और केएल राहुल जो ऑस्ट्रेलिया में करते आ रहे हैं, वो आपके पीछे वो तजर्बा है ओपनिंग करने का। आपको पता है इंग्लैंड कंडीशंस में बॉल कैसे मूव करेगा, कैसे आपको खेलना है, कौन से सेशंस आपको निकालने हैं, कब आपको इंप्रोवाइज करना है अपनी गेम के अंदर। ईश्वरन के साथ एक ये होगा कि दूसरी टीम को एज होगा कि नया लड़का सामने खेल रहा है, पहली बार आ रहा है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर बन सकता है। केएल राहुल आप सामने आपके खड़ा होगा, बल्लेबाजी करता होगा यशस्वी जायसवाल के साथ, तो बॉलर पे प्रेशर रहेगा कि अगर खराब गेंद, थोड़ा सा अगर सेशन खराब गया, अगर खराब गेंदबाजी हुई तो ये उसको इंप्रोवाइज कर सकते हो, सेशन अपने नाम भारत बना सकता है। तो 2 माइंड सेटअप के साथ आप अंदर खेलना चाहते हो। तो अभिमन्यु ईश्वरन, आप अब ये डिसाइड करना
कि कितनी बार उनका बल्लेबाजी करें, कहाँ वो चेंज करें। फिर माइंड क्लैरिटी आ गई कि मुझे क्लैरिटी तो दो कि मैं अगर ओपन कर रहा हूँ कि या फिर नंबर 4 खेल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि विराट कोहली की जगह मेरे हिसाब से अगर किसी को मिलनी चाहिए नंबर 4 पर, वो लंबे समय तक जो उसको उस जगह को भर सकते हैं और रन बना सकते हैं। और एक्चुअली अब जब वो चर्चा छेड़ ही दी आपने सभा भाई, विराट कोहली का वॉइड नंबर 4 पे कौन फिल करेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इकलौता सवाल नहीं था वो ओपनर्स वाला, और ये शायद और बड़ा सवाल है किरण सर, विराट कोहली का वॉइड, और क्योंकि इतनी अहम पोजीशन नंबर 4 टेस्ट क्रिकेट में, आपको कितनी तरीकों के रोल फुलफिल करने पड़ते हैं नंबर 4 पर? आपका गेम हम आप सबसे सुनते आए हैं, कई तरीके की कंडीशंस, कई तरीके की परिस्थितियों के लिए सूटेड होना चाहिए एट नंबर 4. इन दैट सिनेरियो, who fits the bill for India at number 4 in Virat Kohli's place for you, Kiran sir? I think Sabha hit the nail. Actually, KL Rahul is a perfect player, to get at number 4, because आप देखो ओपनिंग बैट्समैन आपके यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल हो गए, देन योर ईश्वरन कैन बी अ नंबर 3 ओपनर, उसको स्ट्रेट अवे इज गोइंग टू वॉक इन और नो, वी डोंट नो अबाउट इट, सो आई थिंक आपके 3 ओपनर हो गए, आपके साई सुदर्शन भी है, आपको बैकअप हो सकता है, साई सुदर्शन कैन आल्सो बैट एनीवेयर, इट्स नॉट ओनली ओपनिंग, he can bat in middle order also. If you struggle, middle order struggle. So you have options there actually. You have say Karun Nair. हमने करुण नायर की बात नहीं की है. Karun Nair has scored 700 runs in domestic cricket. He has got 300 in Test cricket. So don't forget Karun Nair plays also. I think you need to have backup players for each and all the areas. So I think for me, KL Rahul is number 4 is perfect. He can carry that inning because आपके जो 2 विकेट जाती है, तो KL Rahul has got a good temperament to carry on the inning, and plus the second new ball comes, still he can bat, Okay, आपके लिए नंबर 4? हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं नंबर 4 खेल रहा हूँ. मुझे लगता है ना कि ये बहुत बड़ा काम करना है सिलेक्टर्स को, क्योंकि बहुत सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, एंड दैट आल्सो अ मैसिव ट्रांजिशन एंड अ सडन वन. Yes, so that is why the Indian selectors, they need to be extremely careful and at times bold to come up with a squad that can help Indian Test cricket to grow. And we're looking at this new WTC cycle. So you need to have that kind of a top order wherein you can have some youngsters and then have a buffer of middle order with a lot of experience. Shubman Gill is there, KL Rahul is there, Rishabh Pant coming in. So all these batters have got some kind of experience. So that is why, that's the kind of thought process I hope the selectors have. देखिए उसमें क्या हो सकता है कि हम पहले 4 तो हमने डिसाइड कर लिए कि वो टीम देख सकते हैं कि अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ओपन करना है या केएल राहुल, वो डिफरेंट है. पर जहां किरण सर ने बात की नंबर 4 के बाद कौन, अगर हम करुण नायर की बात कर रहे हैं तो मैं श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर क्यों नहीं नंबर 5 पे आ सकता. ही इज प्लेइंग फॉर सो मेनी इयर्स, वो ऑलरेडी वनडे में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, एंड ही हैड दैट स्किल एंड ही हैड दैट एबिलिटी टू स्कोर रन्स ओवर देयर, एंड ही कैन हैंडल दैट प्रेशर आल्सो. इंग्लैंड सीरीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठीक है एक टीम बना रहे हैं, हमारे पास 2-3 चेंजेस हो गई हैं तो हमारे पास वो प्लेयर नहीं दिख रहे, ओपनर चेंज हो गया, नंबर 4 पे जो विराट कोहली खेलते थे नहीं है, अब उनकी जगह कौन लेगा? तो उनकी जगह जो ऑलरेडी वनडेज में अच्छा कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, जो इतने साल से स्कीम ऑफ थिंग्स में है टीम की, तो वो क्यों नहीं ऊपर आ सकता, क्यों नहीं वो क्यों नहीं उस पर रन कर सकते हैं? एक्चुअली एक काम करते हैं ना, आप सबसे आपके टॉप 4 पूछते हैं, और सनपा जी आपसे शुरुआत करते हैं. पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के विरुद्ध भारत के टॉप 4 आपके लिए कौन है? देखिए पहले अभी यशस्वी जायसवाल हैं, उसके साथ केएल राहुल कर रहे हैं, फिर आपके पास आगे हैं अभिमन्यु ईश्वरन, एंड नंबर 4 वी कैन सी शुभमन गिल. पहले 4 आपके लिए गिल एट 4. ऑलराइट, आपके लिए मेरे लिए अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, नंबर 3 कैप्टन शुभमन गिल, नंबर 4 फॉर मी इज केएल राहुल. ऑलराइट, किरण सर आपके लिए? मेरे लिए आई विल गो विद शुभमन गिल एज ओपनर, शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन जैसे सभा ने बताया. और मैं 3 नंबर पे डेफिनेटली यू वांट टू सी, हम लोग क्या करते हैं, एक टैग लगा देते हैं कि हाँ ये ओपनर है. ईश्वरन कैन आल्सो बैट नंबर 3, इफ यू वांट, यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू क्रिएट दैट अपॉर्चुनिटी फॉर समवन, क्योंकि वो जगह तो है उधर. आई थिंक मैं इतना जाएगा, केएल राहुल नंबर 4 फॉर मी, देन यू हैव दैट्स व्हाट ऋषभ पंत को ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, आई गॉट अ डाउट. जैसी इंडिया ए की टूर बनाई है, टीम बनाई है, उसमें देखो कितने विकेट की बस डाले, ध्रुव जुरेल डाले हैं, आपको ईशान किशन डाला है, आपके पास केएल राहुल है, ऋषभ पंत इज गोइंग और नॉट. बड़े दिलचस्प, और इन सवालों पर आज नजर रहेगी, इनके जवाब तलाशेंगे फैन जरूर. लेकिन अब अगला सवाल, इंडिया के स्पिन विकल्प इंग्लैंड टूर के लिए कौन? रविचंद्रन अश्विन अब अवेलेबल नहीं है, ऑफ कोर्स रिटायरमेंट ली थी उस बॉडी गावस्कर ट्रॉफी में. स्पिन विकल्प इंग्लैंड की उन परिस्थितियों में सब भाई आपके लिए?
मेरे लिए रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, मैं चाहता हूँ इन दोनों, क्योंकि फिर आपके पास वेरिएशंस आ जाते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो बॉल अंदर लेकर आएंगे राइट हैंडर्स के लिए। वैसे बिल्कुल डेफिनेटली रविंद्र जडेजा, क्योंकि एक कि देखें इंडिया ए टूर पे शार्दुल ठाकुर को भी पिक किया हुआ, नीतीश रेड्डी तो ऑलरेडी हैं, तो क्या ये दोनों एक साथ खेल सकते हैं? ये भी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं एक्चुअली, और इस पे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन किरण सर, उसके पहले आपके लिए स्पिन विकल्प? मेरे लिए 3 हो गए, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप एंड रविंद्र जडेजा, बिकॉज उनके टीम के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत है इंग्लैंड टीम। तो जॉकी वो डिपेंड करेगा ना कितने मेंबर टीम आप ले जा रहे हो। दैट्स द कॉल व्हिच दे हैव टू टेक। 16 generally for Australian tour they had 16 plus 2 as travelling reserves. So that's something which they need to take a call on. But they always take big. They always take a big squad now. बेटर रहता है कि यहाँ से बुलाना ना पड़े, फिर वही चिंता, वीजा लगे ना लगे, लेट हो गया तो साथ ही चले। बिल्कुल, और उन छोटे पहलुओं पर भी नजर रहेगी आज। लेकिन एक चर्चा जो थोड़ी देर पहले आपने छेड़ी थी शरणदीप पाजी, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, और आपने जैसा कहा क्योंकि इंडिया ए टूर के लिए चयन किया शार्दुल ठाकुर का, भी आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है वो? या डेफिनेटली है, प्लेइंग 11 का हिस्सा कहीं ना कहीं वो दिख रहे हो नीतीश रेड्डी के साथ। क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने की जगह, क्योंकि शार्दुल ठाकुर आपके लिए बल्लेबाजी भी करते हैं, और जहां पे एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेलेगा वो नंबर 6 पे ही आएगा। तो प्योर बैट्समैन की जगह अगर आप नीतीश रेड्डी नंबर 6 पे हैं, शार्दुल एज ए ऑलराउंडर नंबर 7 पे आएंगे, गेंदबाजी भी करेंगे और बल्लेबाजी भी करेंगे। फिर आपके पास रविंद्र जडेजा, एक और लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर आ गया, स्पिनर और बैटिंग ऑलराउंडर आ गया। फिर आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन बहुत स्ट्रांगली बन जाती है वहां पे आके। पर नन्नू दो बोल बैटिंग ऑलराउंडर्स तुम कैसे रख सकते हो टीम में? इंग्लैंड कंडीशंस के साथ अगर आप खेल रहे हो, नहीं मैं कह रहा हूं देन तो फिर तुमको स्पिनर की जरूरत नहीं है ना। नहीं, आप एक स्पिनर तो खिला सकते हैं, आप 3 फास्ट बॉलर करोगे विद 3 top quality pace bowlers in your side. बिल्कुल। Then if you want to go with 5 bowlers and plus Nitish Reddy in your 11, he's already in the 11 because he did well in Australia, so he is already there. But still, क्या आपके लिए वो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन दे सकता है? विकेट टेकिंग ऑप्शन की बात अगर मैं कर रहा हूं, जो शार्दुल दे सकता है वो नीतीश रेड्डी। तुम ये चाह रहे हो कि 3 पेस बॉलर प्लस 2 ये ऑलराउंडर्स खेलेंगे प्लस रविंद्र जडेजा। बिल्कुल टफ कॉल मेरे हिसाब से। थोड़ा मेरे ख्याल में यहाँ पे if you have to pick then it has to be either Nitish Reddy or शार्दुल ठाकुर। आप स्क्वाड में दोनों को ले जाना चाहेंगे? नो मैं एक ही को रखूंगा अभी स्क्वाड में भी, फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस बचते नहीं है। फेयर इनफ। किरण सर, आपके लिए? No, definitely I'll take one all-rounder, not because you already have all-rounders in the team. आपके पास जडेजा है, if you take Washi, so Washi can be useful। मैं बताया कि लेफ्ट हैंडर्स बहुत है, तो आपको जेन्युइनली फास्ट बॉलर के साथ जाना ही पड़ेगा 11 के, आपको 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाने ही पड़ेंगे आपको टेस्ट मैच जितना है। सो आई थिंक यू कैन नॉट जस्ट गो विद एक जो 2 इतने सारे ऑलराउंडर्स नहीं ले सकते आप। फेयर इनफ। बट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो एक आप जिसका चयन करेंगे किरण सर, वो कौन? नीतीश रेड्डी। ओके, ऑलराइट, नीतीश रेड्डी फॉर यू। सर भाई, आपके लिए? नीतीश रेड्डी। आपके लिए भी नीतीश रेड्डी। हमने शरणदीप पाजी से सुना वैसे भी इंडिया ए टीम में ले गए हैं दोनों में से, दोनों को इसीलिए ताकि उन दोनों में से एक को आप पिक करेंगे। फेयर इनफ। शार्दुल ठाकुर ने अच्छी परफॉर्मेंस की और उसने 5 विकेट्स हॉल्स मारे, तो फिर कहीं ना कहीं फिर आप देखेंगे कि यार क्या शार्दुल को खिला सकते हैं? टेम्पटेशन दो रखने ही पड़ेंगे। नीतीश रेड्डी ने ऑलरेडी वहां 100 बनाया ऑस्ट्रेलिया में, बट क्या वो विकेट टेकिंग एबिलिटी बॉलिंग करता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस। फेयर इनफ। और इसीलिए आपने कहा, जैसे इसीलिए सिलेक्शन कमेटी मीटिंग्स का एक मौका आप यहाँ देख रहे हो, और इसीलिए आज मेरी समझ में आया इतनी लंबी क्यों चलती है सिलेक्शन कमेटी मीटिंग। और यहाँ पे सिर्फ 3 है, वहां 2 और होते हैं। इतने अहम सवाल होते हैं ना। अब इंडिया की पेस फैक्ट्री कैसी लगेगी इस दौरे पर, ये भी बड़ा दिलचस्प। क्या आप मोहम्मद शमी को ले जाएंगे? हर्षित राणा, ऑफ कोर्स, वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को ले जाना, क्या वो टेम्पटेशन होगी जिस तरीके का आईपीएल रहा है उनके लिए? हैव टू बी प्रसिद्ध कृष्णा मेरे हिसाब से। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ये 3 मेरे टॉप पिक्स हो गए। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया टूर पे यू हर्षित राणा, यू आकाशदीप। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये 2 जो आपके पास हैं, हर्षित राणा, आकाशदीप, इनमें से आपको एक को रखना चाहिए। और उसके साथ साथ यू नीड टू हैव अ लेफ्ट आर्म सीम बॉलर, और ऐसा बॉलर जो बॉल को स्विंग कराए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश कंडीशन में आपको ऐसा लेफ्ट आर्म सीम बॉलर चाहिए, स्विंग बॉलर चाहिए, जो बॉल को थोड़ी स्विंग कराएगा। उससे मुझे लगता है कि जो गेंदबाजी
bowling unit India का that will become लेफ्टी फास्ट बॉलर्स में से ऑप्शंस खुल जाती हैं. अर्शदीप है, खलील अहमद है, आपके लिए दोनों ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया. लेकिन अगर अर्शदीप सिंह की अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली तो काउंटी क्रिकेट खेल के आए जी, काउंटी सीजन खेला, उनको वो तजुर्बा है. तो कहीं ना कहीं और आप ओडीआईस भी खेल रहे हैं, T20s भी खेल रहे हैं, आप स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं, आप भारतीय टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आने वाले समय में क्या डिमांड हो सकती है, क्या जरूरत हो सकती है, क्या मुझे भारतीय टीम देख रही है. अगर साथ में दे रहे हैं कहीं ना कहीं बात जरूर की होगी. Who will be a fourth seamer? In case we pick Arshdeep Singh, 3 सीमर हम लोग नाम ले लिया है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा. Who will be a fourth seamer? My fourth seamer is going to Pacers. No, बिल्कुल. I think I go with this guys. You know what numbers they are. कैसे हैं प्रभु? भारतीय टीम की हालत अच्छी है. कल दोनों ओपनर्स सस्ते में आउट जरूर हुए, लेकिन नंबर 3 पे आए करुण नायर और आज उन्होंने मचा दी फायर. 204 रन बनाकर आउट हुए, पर 2 मिनी हार्ट ब्रेक्स भी हुए हैं क्योंकि 2 भारतीय बल्लेबाज 90s में आउट हुए, सरफराज और ध्रुव जुरैल. और यहां 2 विकेट्स जॉश हल, जमा अख्तर और जैक को मिली हैं. सबसे ज्यादा पिटाई खाई है रेहान अहमद ने, जो पिछले साल जब भारत आए थे वहां भी पिटे थे सीनियर क्रिकेट में. और यहां पर एक बड़ा अच्छा दिखने वाला स्कोर बना दिया है इंडिया ए ने. मेरा नाम है सुनील तनेजा, साथ में मेरे भाई मनविंदर बिस्ला आ चुके हैं. बिस्ला भाई, डेक्लेरेशन का तो सवाल होता नहीं यहाँ पे इस तरह की क्रिकेट में, तो उम्मीद की एक और सेशन भारतीय बल्लेबाज खेल पाएंगे? ये दोनों तो खेल सकते हैं. जब आप देखते हैं जिस तरीके से ठीक लंच से पहले बैटिंग करी थी इन्होंने, उम्मीद तो यही रहेगी कि दुबे यहाँ पे एक बढ़िया शतक भी लगा सकते हैं. और अभी देखेंगे, अगर आप इन्हें कैरी भी देखते हैं, 7 अर्धशतक लगा चुके हैं. कमाल के बैटर हैं. वही अंशुल कंबोज, इनके नाम है ना, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अभी तक अर्धशतक है नहीं. और इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? ना ही तो कैप्टन कह रहा है आपको रिटायर होने के लिए, कोई जल्दी मचाने के लिए, ना ही कोच कह रहे हैं. जितनी बैटिंग कर सकते हैं आप उतनी बैटिंग करिए. और देखिए अंशुल कंबोज पे भी नजर आएंगी किस तरीके से इनके मैचेस जाते हैं. डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया, इन्होंने काफी विकेट्स ली हैं. दिलीप ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे. एक इनिंग में 10 विकेट इनके नाम है. वो बैटिंग करने का भी मौका मिल रहा है और शुरुआत मिल चुकी है इनको बढ़िया वाली. और जॉश हल शुरुआत करेंगे दूसरे सेशन में बॉलिंग की. बहुत ज्यादा अनुभवी बॉलर्स को खिलाया नहीं है इंग्लैंड लायंस ने, पर जॉश हल ने कल सरफराज को आउट किया विकेट की. हालांकि मोस्टली को हम देख रहे हैं, लेकिन जॉश हल ही शुरुआत करेंगे. और जैसी हाइट है बिस्ला भाई, आप ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि चुनौती देंगे भारतीय बल्लेबाजों को. और मुझे लगता है कल इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं करी, स्पेशली पहले सेशन के अंदर. जब आपके कैप्टन ने टॉस जीता और कहा कि पहले गेंदबाजी करेंगे, उसके बाद आप देखते हैं पहले सेशन में 2 ही विकेट लिए थे. और बहुत सारी गेंदबाजी ने बैकफुट पे हुई थी. फिर आप अगर टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं और आपके लिए वो मदद भी है, लेकिन वहां पे आप वो सही जगह पे गेंदबाजी नहीं करते ना, तो दिक्कत आती है. जो कि दिखा, जो अपने अनुभव की बात कर रहे थे ना, जितने भी बॉलर्स हैं ना, उनके पास इतना अनुभव है नहीं. दुबे जी के पास थोड़ा बहुत अनुभव है. महाराष्ट्र से विदर्भा से इनफैक्ट अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं. पुणे में जन्म हुआ था. और जैसा बिस्ला भाई बता रहे थे, 7 50s हैं इनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. और 69 विकेट्स पिछले सीजन में, वो ज्यादा बड़ी बात है, विकेट चटकाना. और वो काम वो करके आए हैं भारत में. और इसी वजह से यहाँ पे हैं, इंडिया के दौरे पे आए हैं. और देखिए अपनी टीम को ट्रॉफी भी जितवा गए हैं, रणजी ट्रॉफी. खाली ये नहीं कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, टीम ने अच्छा नहीं किया. इन्होंने तो अच्छा किया ही किया है, साथ में टीम को भी अच्छा करवाया है. 69 विकेट्स, साथ में मेरे ख्याल से इस सीजन के अंदर 4 50 भी हैं. इस सीजन में भी कंट्रीब्यूट किया है. कमाल के खिलाड़ी हैं. और इस सीजन में आईपीएल में भी देखिए ना, शुरुआत में नहीं थे, लेकिन जब आए थे अपनी टीम के लिए बड़ी विकेट्स ली हैं उन्होंने. अब जब विराट कोहली को आप शुरुआत में अपने आउट कर देते हैं T20 कैरियर में, आईपीएल कैरियर में, उससे बेहतर क्या होगा? और इससे बेहतर शुरुआत और क्या होगी इंग्लैंड लायंस के लिए? लंच ब्रेक के बाद पहले ही ओवर में हर्ष दुबे को चलता किया है. और जैसा कि अनेक सालों से आप सुनते आ रहे हैं, कमेंटेटर्स कर्ज तो लगना ही लगना होता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ज्यादा ही तारीफ कर दी हमने. नहीं, इनकी गेंदबाजी की भी तारीफ कर दी, इनकी बल्लेबाजी की भी तारीफ कर दी. मैंने कहा ज्यादा तारीफ हो रही है, मैं वापस जा रहा हूं.
और पांचवा शिकार विकेट कीपर के लिए। बिस्ला भाई, कोई स्पेशल इनाम देंगे इस कीपर को आप? ये तो लड्डू सा कैच था, ज्यादा हिलना भी नहीं पड़ा इनको। वो बॉल को देख के मारे। मुझे लगता है वो अपने खुंदकी मोड में जा चुके हैं कि प्रभु आपने पिछले ओवर मुझे पिच पे गिराया था, एक तो मैं बड़ी हिट लगाऊंगा आपके इस ओवर में। पूरे ये माइंडसेट लग रहा है इनका। मुझे तो इनका माइंडसेट लग रहा है कि वो जो बॉल बिल्कुल अभी गोल है ना, उसको चौकोर बनाना है। इतनी जोर से मारना है कि वो एक ही शॉट लगे। लेकिन जॉश हल को ना याद रहे हो कि भाई एक हर्षित राणा जैसा बैटर आया था, उसने क्या शॉट मारा था। मेरा फेवरेट है टेल एंडर द्वारा जो श्री संत ने लगाया था डेल स्टेन को 2000 आंड्रे नेल को, माफ कीजिए, जोहानिसबर्ग में डाउन द ट्रैक आके। ये देखिए, जहां भी गेंद मिलेगी उसके अनुसार जो शॉट उपयुक्त होगा वो ट्राई जरूर कर रहे हैं हर्षित राणा। तो ये एक नई मिनी राइवलरी शुरू हो चुकी है इस मैच में। और मेरा जो फेवरेट शॉट है ना, किसी फास्ट बॉलर ने मारा है और किसी फास्ट बॉलर के मारा है, वो याद आता है बालाजी, शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर अभी तक नहीं बोले शॉट को। और उसी सीरीज मुझे याद है, एक बार और जोर से घुमाया तो बैट उनका है ना टूट गया था, बिल्कुल 2 टुकड़ों में हो गया था। लेकिन बालाजी ने भी उस सीरीज में कमाल की बैटिंग करी थी भाई। शोएब अख्तर की उसकी पीक पे छक्का मारना कमाल बात है भाई। उनको हरभजन सिंह ने भी मारे हैं। आप बिल्कुल मारे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट और में। क्या के मारे हैं, क्या के मारे हैं। 550 पूरे हो चुके हैं यहां इंडिया ए के। बड़ा दिलचस्प ओवर चल रहा है। हर्षित राणा ने काफी सारे शॉट्स लगाने की ट्राई की, लेकिन 550 तब पूरे हुए जब कोई भी मेन बैटर आज लंबा खेल नहीं पाया। करुण नायर वापस चले गए, ध्रुव जुरैल 94 पे आउट हुए, नीतीश कुमार सिर्फ 7 रन, शार्दुल ठाकुर 27। लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर हर एक बल्लेबाज अपना योगदान दे रहा है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ना, बज्जू भाई ने तो बहुतों को मारा है। टेस्ट क्रिकेट में जिनके शतक हैं भाई, वो तो किसी को नहीं मारा होगा उन्होंने, सबको ही मारा है। 550 पर 8 इंडिया ए। प्रभु लोग शेड्यूल देख लीजिए। भारत का इंग्लैंड दौरा, 5 टेस्ट मैचेस जियो हॉटस्टार पे आप लाइव देख सकते हैं। 20 जून को पहला मैच लीड्स में, 2 जुलाई को दूसरा मैच बर्मिंघम। ओह, वहां काफी भारतीय पॉपुलेशन है, कहां नहीं है खैर। लॉर्ड्स में भी है, इंग्लैंड में भी है। 3rd टेस्ट 10 जुलाई को और चौथा टेस्ट वापस आएंगे हम, मैनचेस्टर में शुरू है। इनके इरादे एकदम साफ हैं कि गाड़ी छठे गियर में ही चलेगी। इनके पास चौथा 5वां गियर है ही नहीं। जॉश इनको डराते हैं, ये रेहान अहमद को डराते हैं। रेहान आते नहीं है और आते छक्का खाते हैं भाई। ब्रो यू मीन करे कोई भरे कोई। बिल्कुल यही हो रहा है जी। हर्षित राणा कह रहे थे डट जाओ, पिछले ओवर मुझे डरा रहे थे, मेरे वो बैट पे गेंद नहीं लग रहा था। इस ओवर बताता हूं, अगली गेंद पे भी बहुत जोर से मारने की कोशिश थी। पिछले ओवर में भारत के 550 हुए थे बिस्ला भाई, मुझे लगता है इस ओवर में रेहान के 150 हो जाएंगे, क्योंकि 144 तो हो गए हैं। और देखिए इस ओवर में हर्षित राणा मार चुके हैं पहली गेंद पे। अब इस बात की दिक्कत अंशुल को भी होगी। ओ, रिस्की था, बिल्कुल रिस्की था। सामने की गेंद पैड पे खा ली अंशुल ने। और रेहान अहमद 144 रन देने के बाद आपको पहली कामयाबी मिली है। उन्होंने सुन लिया, ये मेरे 150 के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक विकेट ले लेता हूं। 150 तो हो ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक विकेट ले लो। और जैसी पैड पे लगी थी ना, मेरे को अंदाजा हो गया था ये आउट है, क्योंकि बिल्कुल पैड के नीचे की तरफ लगी है। और ऐसे ना पुराने जमाने में बहुत खेलते थे, उस जमाने में आउट नहीं होता था एलबीडब्ल्यू, ऐसे अंपायर देते ही नहीं थे आउट। वो पांव बिल्कुल मिडिल ऑफ के बीच में था और बिल्कुल नीचे की तरफ खा गए गेंद। और देखिए पीछे वो लेग स्टंप भी दिख रही है आपको। अंपायर ये भी नजर रखता है वहां पे कि वो लेग स्टंप दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको। वापस जाएंगे अंशुल कंपोज, बढ़िया 23 रन बनाकर, और 557 पर 9 है भारत। आखिरी बल्लेबाज मुकेश कुमार।